Hello everyone, I hope you all are fine. Today I am delivering my new lecture about the War of Independence. The War of Independence was fought on 10th May 1857. This war ended the rule of East India Company and British Empire started its rule after this war. Queen had proclaimed its proclamation in Delhi, Allahabad. Queen had proclaimed its proclamation, and the new empire of the British started from 1857 to 1947. Today, there is my first lecture about the War of Independence. After this lecture, I will deliver historically consequent lecture from 1857 to 1947, 90 years 90 years phase. I will deliver these lectures within time frame. So I hope that this is the first lecture you will gain ample information from this is I have suggested you to follow the MCQs paper, because in these days MCQs papers are coming, they are typically handled by the examiner. So let's start our session. Mangal Pandey, Bakht Singh quotation: bombs and pistols don't make a revolution. The Savard revolution is sharpened on the waiting stone of ideas. This is the best way. Sir Syed Ahmad Khan has also confirmed the Muslim idea. Sir Syed Ahmad Khan ने मुसलमान को पढ़ने का मशवरा दिया. This is also Sir Syed's efforts after the War of Independence. He had emphasized on the Muslims to focus on the study. Mangal Pandey, the first person who started revolt, and the gun is very unfaithful lover. Anytime it can change its direction, there is no trust. That's a Mangal Pandey quote. Let's start our session. What was the immediate cause of the War of Independence? There are four options: cartridges, greased cartridges, introduction of new inventions, destruction of the local industry, and lack of leadership. तो इसका सही आंसर हमारा है ए. कैटेजेस हमारे हैं इसकी जैसे कारतूस की वजह से मशरा हुआ, क्योंकि कारतूस में जो चर्बी थी और सूअर का गोश्त मुसलमान समझते थे सूअर का गोश्त थे और हिंदू समझते थे ये चर्बी है. तो दैट वाज द रीज़न ऑफ द कैटेजेस. इसी जैसे मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने वायलेट किया और जंग हुई. राइफल चलाने से, जो इनगल्फ राइफल थी वो चलाने से इनकार किया. व्हाट वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी who becomes the first viceroy of British India after the War of Independence? आखिरी वायसराय कौन थे जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बने? तो he was the Lord Canning. He became the first viceroy of East India Company. C is the correct answer. Which policy of Lord Dalhousie led to the annexation of several states, created security among the princes and the party's general public? Which policy? Dalhousie introduced a policy annexation of several states and created insecurity among the princes and the public. Which policy had that is the annexation of doctrine of leprosy, policy of expansion, annexation of policy means government policy. The Dalhousie introduced doctrine of leprosy. Second Q. Who was adopted the son Peshwa Baji Rao II, whose pension was refused by the British, leading to the resentment and opposition. पेशवा बाजीराव ने जो पेंशन की थी वो रिफ्यूज़ की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि डलहौसी ने जो इंट्रोड्यूस करी थी उसके मुताबिक जो है वो उनकी नेगेट हो चुकी थी पॉलिसी. तो उनका बेटे का नाम क्या था ये पूछ रहे हैं. टीपू सुल्तान, बादशाह जफर एंड नन्ना साहिब एंड ननकाना साहिब. द थ्री ऑप्शन इज करेक्ट. Which religious movement led by Sir Syed Ahmad Shahid aimed to overthrow British rule and had an impact on the Muslims' consciousness in the 19th century? This is Sufi movement, Sikh movement, Jihad movement, Bhakti movement. This is the Jihad movement started by Syed Ahmad Shahid Brelvi. That is Jihad movement. What was the significant event that occurred in the Meerut leading to the outbreak of war? And जंग आज़ादी का सबसे बड़ा जो रीज़न क्या था significant? Execution of Mangal Pandey, disbandment of the 34th Naval Infantry, revolt of the 18 soldiers against the use of the cartridges, massacre of the British officers. सबसे जो सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारा वार का, इनमें से रिवोल्ट ऑफ द 18 सोल्जर्स अगेंस्ट द यूज ऑफ कैटरेज. 80 सोल्जर ने इनकार कर दिया कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, इसी वजह से ये रिवोल्ट बढ़ा. Who led the struggle for independence in Lucknow, where the Queen Hazrat Mahal played a significant role as a regent? लखनऊ में कुछ सिग्निफिकेंट के साथ जो मिल के लखनऊ में किसने रिवोल्ट किया हजरत महल के साथ, और हजरत महल ने भी रिवोल्ट किया इनके साथ. बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब
एंड अहमदुल्ला। तो डी ऑप्शन अहमदुल्ला ने लखनऊ में नेगेट किया था। व्हाट वाज द रोल ऑफ रानी झांसी इन द वार? रानी झांसी ने क्या किया था? रानी झांसी ने नेगेट किया था ब्रिटिश रूल के। शी लेड द रिवोल्ट इन मीरठ, शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कानपुर, शी हैड लेड द ब्रिटिश झांसी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, शी लेड द स्ट्रगल, शी लेड द स्ट्रगल इन द झांसी एंड कैप्चर्ड ग्वालियर। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द फेल्यूर ऑफ आर्मी इंडिपेंडेंस? सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या था फेल्यूर का? तो सिंपल ये रीज़न था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास पायलट प्लानिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। दीज ऑल आर करेक्ट। हु बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ब्रिटिश वार? इंडिपेंडेंस के बाद में कौन वाइसरॉय बने? लॉर्ड कैनिंग बने। रिपीट हो चुका है सवाल। व्हिच पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वो सेम एनेक्सेशन पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी उन्होंने दिया था डलहौसी ने। आगे चलते हैं हम। Who was adopted son of the पेशवा बाजीराव? पेशवा बाजीराव का adopted son कौन था? सिंपल हमारे पास है नाना साहेब। What was the significant event? कौन सा significant event हुआ था? 80 सोल्जर्स ने नेगेट किया था एवन चलाने से। लखनऊ से क्वीन हजरत महल के साथ और कौन था? अहमदुल्ला थे। रिपीट हो चुका है सवाल। रानी झांसी ने क्या किया? रानी झांसी ने स्ट्रगल की ग्वालियर से की, उन्होंने नेगेट किया। What was the failure of the war? क्या थे? ऑल ऑफ दीज थे। सिंपल। उसके बाद में आगे हमारा है who led the jihad movement in early 19th century aiming to overthrow the British rule? जहाद मूवमेंट किसने 19th सेंचुरी में शुरू किया और उन्होंने मुस्लिम पावर को शुरू किया? सैयद अहमद शहीद ने शुरू किया था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मंगल पांडे एक्शन एज बैरकपुर? बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्या किया? जो था उन्होंने मंगल पांडे ने एक जो सिपाही थे उनको जो है ना कत्ल किया ऑफिसर को, उसके बाद में दूसरे को भी उन्होंने ज़ख्मी किया मगर गोली जो है ना सैडल को लगी जाके। तो मंगल पांडे को तो आफ्टर द बैरियर ये था मंगल पांडे को उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया। मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड।